Hello everyone, welcome to this new session on verbal ability. I am Ashish and today I am going to discuss a topic which is asked in every MBA entrance exam. The topic is parajumbles, and in this session we'll try to find out some strategies and tricks to solve parajumbles with a greater accuracy. But before that, there is an important announcement that I want to make. If you want to join our WhatsApp group for free preparation, what you have to do is you need to subscribe to this channel and then go to this link and enter your details. You will be added to that group. अब उस ग्रुप पे क्या होता है, उस ग्रुप पे हम डेली रीडिंग लिंक शेयर करते हैं. दैट विल हेल्प यू इन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी. देयर इज़ अ वोकैब रिपोजिटरी वी हैव मेड जिसमें बहुत सारे वर्ड्स एंड मीनिंग्स हैं, एंड वी हैव डेली क्विजेज, वीकली क्विजेज. So that's all we do on that group. So if you want to join that, you can give your details. Now let's come back to our topic, which is parajumbles. तो parajumbles में तीन चार टाइप के क्वेश्चन होते हैं. वन इज विद ऑप्शंस, अदर आर विदाउट ऑप्शंस. कुछ होते हैं 4 सेंटेंस टाइप, कुछ होते हैं 5 सेंटेंस टाइप. So in different exam, different questions are asked. For example, CAT usually asks you to type in the right sequence. तो हम सारे टाइप के क्वेश्चन देखेंगे एंड फाइनली विल ऑल्सो लुक एट अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन लास्ट ईयर्स कैट एग्जाम, दैट इज कैट 2019. अब क्वेश्चन की स्ट्रक्चर क्या होती है, डायरेक्शंस एक बार पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में पहला क्वेश्चन मैंने जानबूझ के अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए काफ़ी ईजी लिया है. आफ्टर सेकेंड क्वेश्चन ऑनवर्ड्स वी विल सॉल्व एक्चुअल कैट क्वेश्चन. So the direction says that the sentence given in each question, when properly sequenced, form a coherent paragraph. Each sentence is labeled with a letter. Choose the most logical order of sentences from among the 4 given choices to construct a coherent paragraph. तो 4 सेंटेंस हैं A B C D. आपको इनको लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है. ये जम्बल्ड अप हैं, ऐसे अरेंज करना है सो दैट दे मेक अ कोहेरेंट पैराग्राफ. तो ये पैराजम्बल के क्वेश्चन होते हैं, जम्बल्ड अप सेंटेंसेस, नाम से ही पता लग रहा है. अब इनको सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक है टू फाइंड आउट कनेक्टर्स, या उनको मैंडेटरी पेयर्स भी बोल देते हैं. तो सबसे पहले आपको पता करना है कि मैंडेटरी पेयर्स कहाँ कहाँ पे हैं. ये अगर आपने पता कर लिया तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि व्हाट इज द क्लोजिंग स्टेटमेंट. तो गुड क्लोजिंग स्टेटमेंट कौन सा है ये आप चेक कर सकते हैं. और उसके बाद अगर ये भी नहीं मिला तो आप चेक कर सकते हैं कि व्हाट इज अ गुड ओपनिंग स्टेटमेंट. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच विल इंक्रीज योर एक्यूरेसी लाइक एनीथिंग इन पैराजम्बल्स. तो कैसे इनको यूज करना है वो हम क्वेश्चंस के साथ साथ देखेंगे. तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. आप भी एक बार ट्राई करिए आपका आंसर क्या आता है, तब चेक करिए कि आपका आंसर सही है या नहीं. सेंटेंस ए सेज ही हैज़ वर्कड हार्ड थ्रू आउट हिज करियर. अब ये ही कौन है, सबसे पहले तो इसको हमें देखना पड़ेगा. समवन हैज वर्कड हार्ड, हु इज दिस समवन. स्टेटमेंट बी सेज ही हैज फाइनली मैनेज टू गेट रेपुटेशन फॉर हिमसेल्फ. फाइनली मैनेज यानी इससे पहले भी कुछ ना कुछ हुआ होगा. दैट मीन्स इट कैन नॉट बी द ओपनिंग स्टेटमेंट, इट कैन बी अ गुड क्लोजिंग स्टेटमेंट. तो बी एक क्लोजिंग स्टेटमेंट हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस वर्ड फाइनली. C statement says he had to face a lot of challenges in the initial phase of his career. In the initial phase of his career, that means it cannot be a closing statement. It is more likely to be in the beginning. But he यहाँ पे आया हुआ, that means he कोई ना कोई होगा. तो इसको हम शुरू भी नहीं कर सकते C से, ये भी एक चीज़ है. And D statement says रविंद्र जडेजा started his career at a very young age. So this he जो कि A B C तीनों में दिया गया, that person is रविंद्र जडेजा. That means D will come before A, B and C. So our answer will start from D. ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि नाउन हमेशा पहले आएगा प्रोनाउन से. तो जब भी मैंडेटरी पेयर बनाना होगा तो नाउन प्रोनाउन रिलेशनशिप आपको ध्यान देनी होगी. क्योंकि ये ही जो है वो रविंद्र जडेजा के लिए यूज़ हुआ है, तो रविंद्र जडेजा वाला स्टेटमेंट विल बी इन द बिगिनिंग. सो डी से स्टार्ट होगा. So he started his career. Then in the initial phase there was something. He worked hard throughout and finally he managed to get something. So it's a clear cut answer. D के बाद आएगा C, C के बाद A and finally it will end with B.
So that's how you can solve questions on parajumbles by using these three techniques. Mandatory pair आपको find out करने, focus on good closing statements and focus on good opening statements. अब बाकी हम क्वेश्चंस के साथ साथ ही समझते चलेंगे, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं. आगे जो भी क्वेश्चंस हैं दे हैव बीन आस्क्ड इन एक्चुअल कैट एग्जाम्स. तो सबसे पहले हम 4 सेंटेंस टाइप पे आ रहे हैं विथ ऑप्शंस. तो सेकंड क्वेश्चन एक बार ट्राई करिए और देखिए आपका आंसर क्या आता है. देन चेक द सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 2 सेज, पहला स्टेटमेंट, दीज हाई प्लान्स. सो कौन से हाई प्लान्स की बात कर रहा है वो देखेंगे. डाइड स्लोली बट definitively and were replaced by a dream of a huge work on philosophy. So some high plans died and replaced by some other thing. That is given in A. B says in doing whatever little he could. Now he कौन है, फिर से देखना पड़ेगा. Of the new plan, the poet managed to write speculation on technology and political theory. So the he refers to the poet. C says the poet's huge ambitions included writing a philosophic epic on the origin of evil. So that means the high plans जो कि A में बात करी गई है और huge ambitions जो कि C में बात करी गई, they are connected. So CA could be a mandatory pair क्योंकि C says the poet had some huge ambitions and those huge ambition or high plans they died. So CA makes a mandatory pair. तो CA कहाँ पे है वो हमें देख करना है. A में नहीं है, B में नहीं है, C में नहीं है, D में है. That means D should be the answer. तो हमने अभी तक चारों स्टेटमेंट नहीं पढ़े लेकिन हमें पता लग गया कि डी कैन बी द आंसर. इतना करके आप आगे मूव मत करिएगा. जब भी आपको आंसर पता लगे एक बार पूरा पढ़ के देख लीजिए वेदर इट इज़ मेकिंग सेंस और नॉट. तो CADB को एक बार पढ़ के देखते हैं. सी सेज द पोएट हैज़ ह्यूज एम्बिशंस. ए सेज दीज हाई प्लान्स डाइड एंड रिप्लेस्ड बाय समथिंग एल्स. उसके बाद डी सेज हाउएवर नॉट मच वाज डन इज इन दिस रिगार्ड आइदर, ओनली फ्रेगमेंट्स बीइंग रिटन. So again, it's making perfect sense. There were some ambitions, they died and replaced by something else, but in this regard either nothing much was done. And finally, in doing whatever little he could of the new plan, तो जो replacement थी उसमें he couldn't do much, but whatever little he could, the poet managed to write something. So that makes perfect sense. So D is the right answer. So that is how you can eliminate choices and get to the right answer if options are given. Question number 3, again try to attempt it first and then come back to the solution. A statement says the likelihood of an accident is determined by how carefully the motorist drives and how carefully the pedestrian crosses the street. B says an accident involving a motorist and pedestrian is such a case. Such a case, तो कोई किसी चीज़ की उसने बात करी होगी, उसका एग्जाम्पल फिर उसने बी में दिया है. इट इज़ सच अ केस. सी सेज ईच मस्ट डिसाइड हाउ मच केयर टू एक्सरसाइज विदाउट नोइंग हाउ केयरफुल द अदर इज. ईच वन ऑफ हुम, ईच मस्ट डिसाइड समथिंग. तो ये ईच में कौन कौन आएगा. डी सेज द सिंपलेस्ट स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम अराइसेस व्हेन टू इंडिविजुअल्स इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड ईच मस्ट डिसाइड व्हाट टू डू विदाउट नोइंग द अदर इज डूइंग. So D introduce some strategic problem and B says that this is the example of this problem. So D, B seems to be connected. ध्यान से देखिएगा, D ने एक strategic problem की बात करी है और B में उसी का एक example दिया गया है. That accident involving a motorist and pedestrian is such a case. कौन सा case? The strategic problem arises when two individuals interact with each other. So DB is a mandatory pair. DB is not here, DB is not here, DB is here and DB is here. तो DBCA या DBAC ये हमें देखना है. तो DB तो हमने कनेक्ट कर ही लिया है. अब CA या AC को देखते हैं. The A statement says the likelihood of the accident is determined by how carefully the motorist drive, how carefully the pedestrian crosses the street. Each must decide how much care to exercise without knowing the how careful the other is. So B talks about an accident and A talks about the likelihood of that accident. तो B ने उस accident की बात करी. कौन सा accident? Involving a motorist and pedestrian. And then the likelihood of that accident is determined by how carefully the motorist drives
and how carefully the pedestrian crosses the street, and each must decide. यहाँ पे each किसके लिए यूज हो रहा है? Motorist as well as the pedestrian both must decide how much care to exercise. So that means DBAC seems more logical. So D is the right answer in this case. Now let's move to the 5 sentences parajumbles. Question number 4. Again try to attempt the question and find out the answer, then come back. A statement says 2 neighbors never fought each other. B says fights involving 3 male fiddler cabs have been recorded, but the status of the participants was unknown. C says they pushed or grappled only with the intruder. They कौन है यहाँ पे वो देखना पड़ेगा. Pushed or grappled only with the intruder. D says we recorded 17 cases in which a resident was fighting an intruder was joined by an immediate neighbor and ally. And E says we therefore tracked 268 intruder males until we saw them fighting a resident male. So if you look at A and C, A says 2 neighbors never fought each other and C says they pushed or grappled only with the intruder. That means वो आपस में नहीं लड़े, they only grappled with the intruder. So that makes A and C a mandatory pair. So AC is here, AC is here, AC is not here, AC is not here. So either A or B will be the answer. Now आगे देखते हैं क्या हो सकता है. It says D statement, we recorded 17 cases in which a resident that was fighting an intruder was joined by an immediate ally. So again DAC makes perfect sense. Why it makes perfect sense? क्योंकि उन्होंने पहले रिकॉर्ड किया कि intruder was joined by an immediate neighbor. Sorry, the resident who was fighting an intruder joined by an immediate neighbor. Then 2 neighbors never fought each other. They pushed or grappled only with the intruder. So that makes a perfect sense. DAC. So DAC is here. That means this should be the answer. अब देख लेते हैं BEDAC पूरा एक सेंस बना रहा है या नहीं. So B से स्टार्ट करते हैं. Fights involving 3 males fiddler crabs have been recorded, but the status of the participants was unknown. We therefore tracked 266 intruder males until we saw them fighting a resident male. Now that makes sense. They were talking about some fights involving 3 people, but the status was unknown. So what they did to know the status, they tracked 268 cases until they saw them fighting. Then they described how that fighting took place. So BEDAC makes sense. So A is the right answer. So again we have found the mandatory pair AC. उसके basis पे हमने options eliminate किए and finally we came to the right choice. Question number 5 पे आ जाते हैं. Question number 5 में A statement says he felt justified in bypassing Congress. Who felt justified? Altogether on a variety of moves. B says at times he was fighting the entire Congress. So again he. C statement says Bush felt that he had a mission to restore power to president. So that means Bush is that he. तो C जो है B और A से तो पहले ही आएगा. D says Bush was not fighting just the Democrats. At times he was fighting the entire Congress. So D and B is a mandatory pair, clear cut. He was not fighting just the Democrats, but with the entire Congress. So DB. इसको ढूंढते हैं कहाँ पे. DB is here, DB is here, DB is here, DB is here as well. So it is of no use. But DB is a mandatory pair. So last statement says representative democracy is a messy business and a CEO of the White House does not like a legislature of second guessers and time wasters. So E seems to be a good opening statement. चलिए इस पे बाद में आएंगे, but it looks like a good opening statement. So Bush was not fighting the Democrats. At times he was fighting the entire Congress and he felt justified in bypassing the Congress. So DBA makes sense. He was not fighting the Democrats, he was fighting the entire Congress and he felt justified in it. So DBA को देखते हैं कहाँ पे. DBA is here. और हमने ये भी देखा था E sounds like a good
opening statement. So ECDBA should be the right answer, D option. इसको आप पूरा पढ़ के एक बार देख लेते हैं. So representative democracy is a messy business and the CEO of the White House does not like a legislature. CEO of the White House कौन होता है? ये जो बुश की बात करी गई है. So I have used a little bit of general awareness, but that makes sense here. So ECDBA should be the right answer. C statement, Bush felt he had a mission. He was not fighting just the Democrat, but the entire Congress, and he felt justified. That is the flow. अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे. जैसे कि मैंने बताया था, लास्ट क्वेश्चन है दिस वाज आस्क्ड इन कैट 2019. इसमें आपको टाइप इन करना है. दैट मीन्स देर आर नो ऑप्शंस गिवन, यू नीड टू टाइप द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेंटेंसेस. तो 1 2 3 4 देर आर 4 सेंटेंसेस एंड देन यू नीड टू फाइंड आउट द प्रॉपर सीक्वेंस. तो एक बार इसको ट्राई करिए, देखते हैं क्या आता है. फर्स्ट स्टेटमेंट सेज विल ऑल लिव अंडर मॉब रूल अंटिल देन. अंटिल व्हेन ये हमें देखना पड़ेगा, which doesn't help anymore. Perhaps we need to learn to condense the feedback we receive online so that 100 replies carry the same weight as just one. Third stage, as we grow more comfortable with social media conversation being part of the way we interact every day, we are going to have to learn how to deal with legitimate criticism. And fourth says a new norm will arise when it is considered unacceptable to reply with the same point that dozens of others have already. A new norm will arise someday. And till then we need to live under mob rule. So that makes sense. 4-1. 4-1 is our mandatory pair. So someday new norm will arise, but till then we'll all live under a mob rule. अब बाकी दो को देखते हैं, सेकंड और थर्ड को. As we grow more comfortable with social media conversation being part of the way we interact every day, we are going to have to learn how to deal with legitimate criticism, and perhaps we need to learn to condense feedback we receive so that 100 replies carry the same weightage just as one. So third seems to be a good opening thing and second will follow the third. वो कह रहा है कि हमें कुछ नया सीखना है, how to deal with criticism, and perhaps क्या सीखना है हमें वो उसने सेकंड स्टेटमेंट में बताया गया है, सेकंड स्टेटमेंट में बताया. So that means 3-2-4-1 seems to be a good answer. So 3241 should be the answer that you need to type in this question. So that brings us to the end of this session. I hope आपके पैराजम्बल्स की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी इंप्रूव हुई होगी. मैंडेटरी पेयर्स, ओपनिंग स्टेटमेंट, क्लोजिंग स्टेटमेंट फाइंड आउट करना शुरू कर दीजिए whenever you solve पैराजम्बल question, and your life will become very easy while solving the questions on पैराजम्बल्स. If you have any doubt, you can mail me on the email ID given below. We'll again meet with some new topic. Till then, keep practicing.